बेटा न्यू स्टूडेंट्स ने लिख लिया? न्यू स्टूडेंट्स प्लीज फटाफट लिखो यार, मुझे रिप्लाई करो। हो गया तो रिप्लाई करो बेटा प्लीज। तो स्क्रीनशॉट ले लो। Write on the next sum. Write on the next sum. The equation of the tangent to the chord the equation of the tangent to the chord tangent to the chord is y is equal to x square minus 3x plus 4 at the point 2,7 is at the point 2,7 is। तो भाई तो सबसे पहले तो बड़ा फाइंड करना पड़ेगा हमें स्लोप। डिफरेंशिएटिंग बड़ा y विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating y with respect to x, applying the operator dy dx on both the sides, so dy upon dx is x square का डेरिवेटिव बटा 2x, 3x का डेरिवेटिव बटा 3, therefore dy upon dx at 2,7 is equal to x का वैल्यू इज 2, y तो कहीं पे है ही नहीं, हो रहा dy upon dx at the point 2,7 is 2 2s are 4 minus 3 1। अच्छा चलो मुझे बताओ मैडम, ये जो मैंने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया मैडम? ये जो मैंने फाइंड किया बेटा वो मैंने क्या फाइंड किया है? चलो कौन बताएगा आंसर फटाफट? व्हाट दिस इज कॉल्ड टू बी एस मैडम? अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था सब लोग को।
बेटा दिस इज कॉल्ड टू बी एस द स्लोप. This is called to be as the slope of a tangent. The slope of a tangent. चलो आगे. Next time. Therefore, the equation of a tangent. The equation of a tangent passing through 2,7. Passing through 2,7. And having the slope 1. And having the slope 1 is in the slope point form. Is in the slope point form. That is y minus y1 is equal to m into x minus x1. Therefore, y minus y1 का वैल्यू 7, m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू इंटू x माइनस x1 का वैल्यू. तो चलो सॉल्व करो मैडम. मुझे बताओ तुम्हारा जो आंसर तुम्हें मिल रहा है बेटा वो क्या मिल रहा है. ऑप्शन ए y is equal to 2x minus 13. Y is equal to 10x. See, y is equal to 10x minus 13. D, y is equal to 10. Check करो which option is answer. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. तो आ गया बेटा आंसर.
ब्रैकेट ओपन करो, Karsha, which option is answer? A. Y minus 7 is equal to y is equal to x minus 4. Y is equal to, लग रहा है कोई करेक्शन है बड़ा इसमें. Let it be. सब करेक्शन होगा बड़े यहाँ पे. Some important result here. Okay, so ready? Some important result here. A raised to log x to the base a. Answer is equal to x. Answer is equal to x. पर ये पॉसिबल कब हो सकता है मैडम? ठीक है. When indices का base and log का base is the same. मैंने रेगुलर बैच में पढ़ाया था ये रिजल्ट. रेगुलर बैच में मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन में. ये याद आ रहा है तुम लोग को? सब a raised to log x to the base a. आंसर इज इक्वल टू x. फिर बुक में चेक करो बड़ा मिलेगा. ये रिजल्ट बेटा हमें यूज करना है नेक्स्ट उसमें. ठीक. y is equal to
y is equal to e raised to a log x plus e raised to बराबर, then dy upon dx is equal to dy upon dx is equal to, चलो रेडी हो सब लोग पढ़ो। तो start the sum as y is equal to e raised to a log x plus e raised to x log a। चलो अब जब तक बड़ा ये सिचुएशन एज इट इज रहेगा ना, ये कभी भी बड़ा हमारे सम को सॉल्व नहीं करने देगा। तो ट्राई टू सॉल्व दिस गिवन सम in some easier way. Try to solve the given sum in some easier way. Okay. Therefore, y is equal to e raised to by using the बड़ा power rule, ये हो जाएगा बड़ा log x raised to a plus e raised to a log a raised to x। रीजन लिख दे रहा होगा, that is by using the power rule। अब ये देख लो, by using the some important result, ये देख आंसर आता है क्या, y is equal to इंडाइसिस का बेस लॉगरिथम का बेस इज वन और द सेम। अब इसके बाद तुम लोग को बड़ा डिफरेंशिएट करना है और आंसर फाइंड करना है।